Okay, so clubs are basically specially designed classes. Children learn a lot, for the last 6, 7 months, they learn a lot. But, it becomes like syllabus, and then they have exam evaluation, then we work on remedy activities. So it becomes monotonous at some point. So they need practical experience. From the beginning, we are saying children need practical experience. They need to connect their life with lesson and all, but with this exam process somehow it has reduced. So these clubs will help them to do that, like whatever they learned in their classes, syllabus में कुछ है उसको practically वो करके देख सकते. तो ये क्लासेस में generally like we are going to give them some topics, so children will have practical experience, discuss और कुछ observe करना, hands on activities करना, all those things करेंगे. but उसका idea है, lesson है, that will come from their syllabus. So it is a integrated class with their syllabus and life skills. And each child can choose two clubs. We are going to give you a list of clubs. So from that list, children can choose two clubs. So second, each day they'll have 50 minutes class for a club. वैसा हर एक क्लब का 18 days मिलेगा. For example, if the child chooses two clubs, first club के लिए 18 days मिलेगा. The child will go for the first club for the first 18 days. फिर once that club gets over, for the second club he'll go for 18 days. वैसा रोज club classes will be conducted for 15 minutes. Next, why clubs? Like I said, again, it's a time for them to revise whatever they have learned, and then it will help them to clubs will help them to go beyond topic. Textbooks are made for average level. So textbook has to cover children who are in the last level, and textbook has to help children who are brighter. मतलब class में दोनों group है, so textbook cannot be different for each child, right? So textbooks are made for average level पे बना हुआ है. तो उनको टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाना है. तो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग क्लब है, तो कुकिंग टेक्स्ट बुक में नहीं है. सो डोंट वी नीड दैट स्किल? तो वो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाने के लिए these clubs will help them. That is why we do club every year. And then to build certain skills, certain skills like creativity है, टीम वर्क है, लीडरशिप है, वो रेगुलर क्लास में करना इतना आसान नहीं है. We try to do maximum, but individual experience देना थोड़ा मुश्किल है. So these clubs are conducted to help children to get those skills. Then learning again, when exam comes, we say like don't take exam pressure. We tell parents like don't push children. But somehow when we say exam, question paper, mark sheet, automatically that pressure comes. That pressure reduces the fun. But this is the time for them to explore a lot of new things in a fun way. Then children have their own interest, but उसको explore करने के लिए time नहीं मिलता है, because they go by text. Whatever topics are given in the textbook, whatever subjects are provided by CBSE, that is what they learn in school. उनका खुद का interest है, वो explore करने के लिए time नहीं मिलता है. So today's world, right, there are a lot of opportunities have created. For example, food tasting के लिए एक profession है. वैसा हम टेक्स्ट बुक में पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, बट फूड टेस्टिंग के लिए उनका काम है. कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टी मेकिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, टी फैक्ट्री है, उनका काम है टी फैक्ट्री में जाना और टी पाउडर को टेस्ट करके बताना दिस इज द सेम टेस्ट. ऐसा एक प्रोफेशन है, एंड देन दे आर हाईली पेड, राइट? सो वैसे बच्चों का इंटरेस्ट है, वो एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, बट दीज क्लब्स विल हेल्प देम टू ब्रिंग आउट देयर टैलेंट्स, एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट. When and how the club will start? Children are asking us for so many days, but children will have campaignings, and teachers will go to classes and explain them before 1st December को पहले बच्चों को, like we will explain each and every club. So children will get to know what are they going to do in each club. फिर एक Google form हम share करेंगे for the parents to uh, sit with the child, and whatever the child says you have to choose the club. तो Google form में you'll help the child to choose the club, and then clubs will start from 3rd December. So 3rd December को first club class चालू होगा.
subject wise is made. We'll share the timetable with you. You can see each class and number of classes and all. This is just for an idea. So how much parents need to help choosing the club? I'll take some time here to explain you the whole process. So basically, the idea of giving options to children is to help them learn decision making. आजकल बहुत बड़ा problem decision making में है. So when we get a choice, we don't know how to choose. We struggle a lot. तो बाकी सब पढ़ते हैं स्कूल में इंग्लिश मैथ ग्रामर सब कुछ बट nobody teaches us how to choose things. एग्जाम्पल हम 12th जाने के बाद बच्चों को पूछते हैं लाइक 11th जाने के बाद पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है. So they don't know about what are the courses are there, whether to choose math or science. So they are always pressured when they choose courses. And end पे parents ही बोल देते हैं आप maths पढ़ लो ना. और टीचर्स बोलते हैं और कोई गाइड होते हैं वो बोलते हैं कौन सा चूज करना है. But children are not, they don't have the skill to choose. फिर कॉलेज खत्म होने के बाद पता चलता है उनको वो कुछ भी पढ़ा है वो इंटरेस्ट नहीं है. तो पीपल इफ यू सी राइट वो इंजीनियरिंग करने के बाद और कुछ काम करने के लिए जाते हैं. और बीकॉम करते पता नहीं है क्यों किया. लेकिन बीकॉम करने के बाद और कोई प्रोफेशन में जाते हैं. टीचर्स को पूछ लीजिए और क्लर्क है और कोई भी प्रोफेशन में है. इफ यू आस्क 70-80% ऑफ देम विल से एक्सीडेंटली आई गॉट इनटू दिस जॉब. इट्स बिकॉज दे ऑलवेज फेल्ड इन डिसीजन मेकिंग. और ये स्किल कोई सिखा नहीं रहे. So that is why from first standard we give them to choose something. तो let them choose. इसमें like कोई बच्चे ने बोला मुझे कुकिंग क्लब करना है. Let them do cooking club because it is not, if they choose cooking club now, it's not that till end of school life they are going to do only cooking club. अगले साल वापस options आएगा. वापस they'll get to choose something else. If they make a mistake, let them make a mistake. That is how they understand. That is how they learn how to choose something. Uh, मे बी लाइक आफ्टर दे सिलेक्टेड कुकिंग क्लब वो सोच के चूज किया होगा कुकिंग क्लब गया तो ज्यादा खाने के लिए मिलेगा और हम लोग बना के खाएंगे. लेकिन कुकिंग क्लब जाने के बाद पता चलेगा वो बनाते हैं लेकिन खाने के लिए कम मिलता है बाकी लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. फिर द चाइल्ड थिंग्स अरे कुकिंग क्लब नहीं चूज करना चाहिए था और साइंस क्लब चूज करना चाहिए था क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बना रहे और रोज घर पे लेके जा रहे. There are a lot of ideas and their wish interests keep going and that we should give them time. We should give them time to try all these things. Whether if they even make a mistake, let them make a mistake. It's okay. Next year they will think and choose. So next, these are the list of clubs we are opting for. We are going to provide for grade 1 to grade 4. So grade 1 to grade 4 will have creative writing club, discovering science club, life skills club, culinary and cooking club, or gardening club. So Sir, these we are the five. hear you. You can't hear me? Can you hear me now? Your voice is very slow, sir. Voice is very slow. Sorry for that. Can you hear me now? Uh, can someone else say? Yes, Can you sir. hear me? Okay, thank you. So these are the five clubs available for grade 1 to grade 4. So children need to choose any two from this. And in the Google form, we are also giving you one more, option saying that optional club. So the child will choose two clubs which the child wants to do, and one club will be optional. So, for example, if one particular club में ज़्यादा entry नहीं हुआ, like we need at least 10 children, coming for a club. If we have less than 10 registration for a particular club, we may need to cancel that club because very few children can't go for a club. उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग है, फील्ड ट्रिप्स प्लान किया है, एक्टिविटीज प्लान किया है और समवेयर लेस नंबर ऑफ बच्चे के साथ वो क्लब अच्छा भी नहीं लगेगा. There need to be more children to discuss, participate, compete and all. So less number of बच्चे होंगे कोई क्लब में वो चूज कर मतलब वो कैंसिल करना पड़ेगा. In that case we will give the third club to the child. So in the Google form, two clubs the child need to choose from this list. Additionally, one more optional club the child has to choose and keep. And these are the clubs available for grade 5 to grade 9. Public speaking and debate club, astronomy club,
डिजाइन क्लब, एंड अगेन कुकिंग क्लब एंड गार्डनिंग क्लब। सो इसमें से दो चूज करना है और एक ऑप्शनल क्लब भी चूज करना होगा। Excuse me, sir, if you can share the previous slide from one first grade to fourth grade. Yes, Thank you. these are the clubs. Don't worry, we are sending you a document with all the clubs and their details and all. What is this club is about, what activities will be done, what is the plan for a day, और इसका highlights क्या है, end पे क्या करने वाले हैं. All those things are written on a document. We will share that document with you. You can read it and read aloud to your child. Any questions so far? Yeah, there's a question that you need to choose only two clubs, but in case we will have an additional option saying that third priority. So third priority में if you choose a club, वो कोई भी क्लब, दो क्लब में कोई भी क्लब कैंसिल हुआ और थर्ड प्रायोरिटी में चूज किया है वो क्लब देंगे। बट द चाइल्ड विल हैव टू क्लब्स 18 days में डिवाइड किया है। फर्स्ट 18 days द चाइल्ड विल गो फॉर अ क्लब, once that club gets over then the child will go for the second club in the next 18 days, right? So now we are going to explain you about each club. uh, so now I'll explain you about design club and science club. After that, few more teachers will come and they will explain you about their own clubs. So first, design club. Design club is for 5 to 9 children, so they can choose this club. Again, someone has started. Let me stop this. Okay, so first, what is design club? So design club is a space where children sit and design things. Basically, we all understood the meaning of design because design has used in design, the word design has been used in different places with wrong meanings. कोई आपका मैरिज फंक्शंस में मेहंदी डालते हैं उसको हम बोलते हैं डिजाइन, और टाइल्स डालते हैं घर पे उसको बोलते हैं हम डिजाइन, और घर पे कुछ ड्राइंग किया उसको बोलते हैं डिजाइन. सो दोज थिंग्स आर नॉट डिजाइन्स, दे आर कॉल्ड पैटर्न्स. आप टाइल्स डालते हैं हम घर के बाहर, दैट इज अ पैटर्न. और हाथ में कुछ ड्राइंग करते, दैट इज अ पैटर्न. डिजाइन इज समथिंग, यू नो design is something which the idea Hello. is not there, or idea is something else. From that, completely a new idea you innovate Hello. or invent. That's called design, right? So this chances, creating something on their own, ये chance बच्चों को बहुत कम मिलता है. Most of the time we tell children to copy something, or even art classes में teachers give them a sample picture. ये देख के बनाओ, और चिल्ड्रन गेट अ बुक, वहां पे ड्राइंग्स वगैरह किया हुआ है और दे कॉपी. सो स्लोली द एजुकेशन सिस्टम बिकम्स लाइक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. चिल्ड्रन डोंट गेट टाइम टू think something, try something, modify and then create something on their own. तो उसके लिए ये डिजाइन क्लब बना हुआ है. So this design plays important role in many professions including fashion designing, interior designing, architecture, or manufacturing and finance. So ये profession is very rare. People are very less because very few people think on their own, create something on their own. Rest of us are just copy pasting. एंड दिस इज हाईली पेड प्रोफेशन है. तो कोई दिन दिन रात बैठ के कुछ बनाता है, उसको पैसा मिलता है. उससे ज्यादा उसको डिजाइन प्लान करके देता है, आर्किटेक्ट है और डिजाइनर्स है, वो प्लान बना के देते हैं. वो एक ही दिन में प्लान बना के उनको पूरा साल का बाकी लोग कमाते हैं उतना मिल जाता है, बिकॉज डिजाइनिंग इज वेरी रेयर. तो वो skill, like we want to give it to children, and later on when they pass out from 10th standard, 11, 12th standard, they'll know where to go and what to choose. Right now a lot of universities are have started designing as a subject. So designing as a subject they can choose and study.
तो उसका एक्सपोजर देने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस क्लब, सो स्पेशली चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम 6th standard to 9th standard, if they choose this club and if they practice all these things, they can explore their interest in designing. So when it'll be time to choose club in 11th standard, they'll know whether to choose designing, as a course or not. तो उसके लिए है क्लब। एक दिन का प्लान ऐसा होगा, तो हर एक दिन चिल्ड्रन विल बी गिवन सम चैलेंज इन द क्लब, एंड चिल्ड्रन विल हैव टू ट्राई ऑन देयर ओन, थिंक अबाउट इट, प्लान एंड देन ट्राई। फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके फिर उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आउट करेंगे, देन दे विल बी अ डिस्कशन। डिस्कशन करके फिर कंपेयर करेंगे विच प्रोटोटाइप, वट एवर मॉडल दे मेक, विच मॉडल वर्क बेटर एंड विच डिडंट वर्क बेटर, और ये क्यों अच्छा किया, ये क्यों अच्छा नहीं किया। Then will they'll make modification in their own model and they'll try it again. This is the process of designing that they will try in every class. Process as designing is you get some idea, उसके ऊपर brainstorming करना है, फिर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करके एक प्रोटोटाइप बनाना है, फिर उसको ट्राई करना है, फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव लिस्ट डाउन करना है, फिर डिस्कस करके कंपेयर करना है, फिर मॉडिफाई करना है प्रोटोटाइप में, फिर एक नया मॉडल लेके आना है। ऐसे बच्चे रोज एक एक उनको चैलेंज मिलेगा, दे विल मेक थिंग्स ऑन देयर ओन, ट्राई ऑन देयर ओन, डिस्कस ऑन देयर ओन, फिर दे विल ब्रिंग अप विद अ better model, and that's how we are going to give this idea of designing, give them experience to create something. ये क्लब में क्या क्या हाईलाइट होगा, तो एवरी डे दे गोना गेट अ चैलेंज, ईच चाइल्ड विल मेक देयर ओन प्रोटोटाइप। इट्स नॉट लाइक टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया बाकी बच्चों को सिखाया, इट्स नॉट गोइंग टू बी द normal lecturing class. It will be, individually they will make their own prototypes and they will try. And ये clubs end में, like, on 17th and 18th day, we will give them a big project to create. सो एक आइडिया देंगे, उसके ऊपर उनको उनका खुद का प्रोजेक्ट बनाना है, लास्ट में वो बेस्ट प्रोजेक्ट will be awarded. So we are also have a guide who is a professional, as a professional he is a designer. वो डिजाइनर को हम लोग हेल्प के लिए बुलाया है, he is going to help us throughout this 18 days. So he will come on the last day, he will choose one big project which is better than others, और वो प्रोजेक्ट मेकर को अवार्ड मिलेगा। एक्सपेंस एस्टिमेशन, ये हर एक क्लब का कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होने वाला है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग डेमोन्स्ट्रेशन, ईच क्लब इज गोइंग टू गिव मटेरियल्स टू ईच चाइल्ड, सो ईच चाइल्ड विल हैव देयर ओन, will have their own materials, they will try on their own, so उनके लिए पर्सनल मटेरियल्स चाहिए होगा। So for that we will ask you to pay for some money. Some clubs are going for field trips, some groups are going for sightseeing, or some clubs are inviting specialists who are going to come and help. For example, astronomy club is going to call a scientist from Mumbai Planetarium. He's going to get his telescope and all. So each club has some expenses. So that may vary from club to club, depends on what they use and what they are going to see. It may vary from 300 to 800, or it may go higher also. So rough estimate of the expense of design club is 500. So they need a lot of materials to create their project. So rough estimation is 500. But once the club starts, when they actually do, it may vary. तो ये क्लब सब खत्म होने के बाद देन वी विल सिट एंड कैलकुलेट कितना एक्सपेंसेस हुआ है फॉर ईच चाइल्ड, एंड दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर थ्रू नच। ये आपको पहले हम बता देंगे एक क्लब का इतना एक्सपेंसेस है, और यू नीड टू पे दिस मच एक्सपेंस फ्रॉम योर नच। तो वैसे आपको पहले हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, उसके बाद नच से हम डिडक्ट करेंगे। Then we have Discovering Science Club. This is similar to Design Club, but this is for 1 to 4 children. Design Club was for 5 to 9 children, but Discovering Science Club is for 1 to 4 children. Again, the concept is same. This club will give them a lot of chance to try things on their own. And secondly, टेक्स्ट बुक्स आर मेड इन सच अ वे दैट 1 to 5 के लिए बहुत सिंपल टॉपिक देते हैं, एयर है, एनवायरनमेंट में कौन सा इंसेक्ट है, और व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ऐसा आता है। बट व्हेन यू गो टू 6th standard, अचानक मोशन चालू हो जाएगा, और सिंपल मशीन्स है, वैसे
न्यूटन्स लॉ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ऐसा टॉपिक शुरू हो जाता है. सो चिल्ड्रन स्ट्रगल अ लिटिल व्हेन दे गो टू हायर क्लास बिकॉज दे हैव नॉट हर्ड दीज वर्ड्स बिफोर, और प्रैक्टिकली कुछ सीखा नहीं है. इवन चिल्ड्रन who go 11th and 12th who go to IIT, they struggle to understand these concepts because वो 1 to 5 में ज्यादा hands on activity करते, तब ये टॉपिक सब नहीं आता है. सिंपल मशीन है, ये मोशन चैप्टर है, स्पीड है, ये टॉपिक सब 1 to 5 में नहीं है, वेयर दे डू अ लॉट ऑफ experiments, hands-on activities. When children go to 11th and 12th, right, there they get these topics. There's no time to do hands-on activities. Their children study, mug up, and then they go for exam. That is where children struggle. So they never get to do something on their own. That is why we have brought these topics in younger grades. So first to fifth children, they will do activities, they will do make models to understand these topics, like how does an aeroplane fly, buoyancy kya hota hai, or Archimedes principle kya hota hai. For all these things they will do experiments, hands-on activities. And children initially start like a game, like they'll make a model, they'll make it like a toy, they'll play with it. Dheere dheere teachers will explain them how does this toy work, how does this model work, iske piche science kya hai. So these experiences help them in higher classes to understand these kind of topics. That is why we have brought this here. And these are some example topics. Hey, don't worry. Like you don't need to, write down. This will be shared with you as a document. You can read it later. Just for an idea, so these are the topics are going to be there. Children will design a police system, and then they will work with the police system and then understand how police work. And then again, screws, these are simple machines. Energy का model बनाएंगे, एक windmill बनाएंगे to understand how energy is converted into a different energy. They'll make साउंड सीखने के लिए साउंड ड्रम बनाएंगे, और they'll make models of rockets and aeroplanes to understand how movement works. And they will make boats and submarine to understand how buoyancy works, right? So these are examples of topics which they are going to learn in the class, and for each topic they will make a model and then learn it. ये एक दिन का प्लान है, similar to designing class. They will build something, and then they will test and observe how does that model work. Then there will be a discussion and reflection to explain how does this model work, what is the science behind it, and how does that will be connected with the real life or model ke through, like how actual aeroplane works, how actual ship works, submarine works. That's how they discuss in the class. ये क्लब का highlights है. One is everything is going to be hands on. There is no demonstration, lecturing and all. Always the class will start with a hands on activity. पहले बच्चे बनाएंगे, they'll play with it, then there will be an explanation. And the second, weekly takeaways, like 1 week में whatever they make, वो models they can weekend में घर पे लेके जा सकते हैं. Then there will be demonstrations. ये बच्चे कुछ बना रहे हैं, उसके साथ real life चीज के साथ डेमोन्स्ट्रेशंस होगा. like things like rocket launch, hot air balloon कैसे fly करता है. For these things teachers will give them demonstrations. Field trip, end of the club, children will visit Dharampur Science Center because these topics के लिए वहां पे live models है. For हर एक topic वहां पे एक science park है. For all these topics there is a science park where children can slide or throw ball, or try Archimedes wheel, वैसे models है. तो धर्मपुर साइंस सेंटर से के whatever they have learned in the club they will see it live. Again इसका एक estimation है. So this club expenses approximately will be like 1300, because 500 for their materials and 800 for the field trip to go to Dharampur. Again, this is a roughly estimated figure. Once the club gets over, we will give you actual price. Okay, this is about science club. uh, so I'd like to call Sakshi teacher to explain about uh, 1 minute, elocution and debate club. Can we have Sakshi teacher? Can you please unmute yourself? Sakshi teacher? Okay, Noreen teacher, can you unmute yourself, please? Yes, sir.
So I'm starting with cooking club, teacher. Okay, sir. So, hello parents. I hope I'm audible to everyone. Yes. Oh, thank you. So, talking about culinary and cooking club, I mean, cooking club is something which will help student to discover and explore about lot of other career options. Generally ऐसा होता है कि cooking means सिर्फ kitchen में खाना बनाना नहीं होता है. There are lot of other career prospectus to culinary and cooking. Next slide, please. So culinary is basically amalgamation of art and food. So generally हम कैफेज में जाते हैं, हमको खाना इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि इसका पोस्ट हम क्लिक करके, इसका पिक्चर क्लिक करके हम पोस्ट कर दे. इट्स बिकॉज उसका प्लेटिंग सेंस वैसा होता है, उसको प्रेजेंट वैसे किया जाता है, सो दैट इट मेक्स इवन सिंपल डिश को भी इतना अट्रैक्टिव दिखता है. एंड इफ यू से कि घर पे दाल चावल है और होटल में दाल चावल है, तो दाल चावल होटल का ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उसका प्लेटिंग वैसे किया गया, वो इतना अट्रैक्टिव है कि आप फोटो क्लिक करके उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो. सो बेसिकली culinary इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर फूड. जो भी हम डिशेस बना रहे हैं उसको प्रेजेंट कैसा करना है, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस जाएंगे, कौन सा फूड कौन सी प्लेट पे अच्छा दिखेगा, या फिर उसका सिमेट्री कैसा होना चाहिए कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे. तो बेसिकली culinary एंड कुकिंग क्लब में हम बच्चों को यही सारी चीजें सिखाने वाले हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है फूड के रिलेटेड, और इसका कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं है. अगर किसी बच्चे ने साइंस भी ऑप्ट किया है तो वो भी फूड इंडस्ट्री में काम कर सकता है एज अ फूड साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन या डाइटिशियन की तरह. अगर किसी ने कॉमर्स ऑप्ट किया है या आर्ट्स ऑप्ट किया है, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है फूड इंडस्ट्री में. एंड पेरेंट्स, आप सबको पता ही होगा, बिकॉज देयर इज नो अदर बिजनेस लाइक फूड बिजनेस. आप हर एक जगह छोड़ के, हर एक शॉप छोड़ के, आपको कुछ ना कुछ समथिंग रिलेटेड टू फूड यू विल फाइंड. और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कंटेंट क्रिएटर, लाइक पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट मेकिंग कंटेंट. सो फूड इंडस्ट्री इज आल्सो ग्रोइंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन. Food critics hai, food writers hai. There are a lot of people who write recipe books. There are a lot of people who are health enthusiasts, and they also write books about it. So there are a lot of career options which are related to food industry. Next slide. सो स्किल्स पे हम फोकस करें. कुकिंग क्लब इज नॉट ओनली अबाउट के खाना बनाया, सबको टेस्ट करवाया, अच्छा था, बट देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स व्हिच वी हैव थॉट ऑफ फॉर culinary एंड कुकिंग क्लब. सो हम बच्चों को कटिंग एंड चॉपिंग सिखाने वाले हैं. जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडियंस का फेवरेट फ्रूट ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी होता है. एनी गेसेस क्यों? बिकॉज इसको ना पील करना होता है, ना कट करना होता है, सिर्फ वॉश किया एंड डायरेक्टली यू कैन कंज्यूम इट. बट बहुत सारे फ्रूट्स है जिनको पिलिंग और कटिंग जरूरी है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी ज्यादा है. तो हम बच्चों को सिखाने वाले हैं कि कैसे वो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पील करना है, कट करना है प्रॉपर्ली. और हर एक डिश का अलग स्टाइल होता है. साथ में हम बच्चों को ये भी सिखाने वाले हैं कि कैसे हम रोटी या पराठा के डो को नीड करते हैं और उसको रोल कैसे आउट करते हैं. देन फॉर हर एक रेसिपी, हर एक डिश के लिए उसका जो क्रॉकरी यूजेज होता है वो भी डिफरेंट होता है. तो हम बच्चों को ये भी सिखाने वाले हैं कि कौन से डिश के लिए कौन सा क्रॉकरी यूजेज कर रहे हैं. देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड के प्लेटिंग एंड सर्विंग स्किल्स, सिंपल रेसिपीज को भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो रेसिपीज आपको लगे कि कुछ मल्टीनेशनल कुजीन काइंड ऑफ थिंग है. देन डाइनिंग एटिकेट्स. पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, जब कैंटीन में बच्चे खाना खाने आते हैं तो लास्ट ईयर ऐसा था कि वी फेल कि इतने सारे बच्चे खाना खाएंगे, टेबल पूरा मेस्ड अप होगा, इतना सारा क्लीनिंग करना पड़ेगा. बट ऐसा, ट्रस्ट में, आप स्कूल में अगर आप या कैंटीन में देखोगे लंच टाइम के बाद, इतने सारे बच्चा खाना खाने के बाद भी द टेबल्स आर क्लीन. बच्चों को समझ में आता है कि खाना खाने के बाद इफ दे हैव स्पिल्ड समथिंग, उनको क्लीन करना है. प्लेट में जितना भी खाना है उसको प्रॉपरली खाना है. अगर कुछ डिस्पोज करना है तो उसको कैसे डिस्पोज करना है. सो डाइनिंग एटिकेट्स, culinary एंड कुकिंग क्लब विल मेक श्योर कि बच्चों को अब नेक्स्ट लेवल लेकर जाए डाइनिंग एटिकेट्स में. देन रेसिपी राइटिंग इज वन थिंग. पीपल हु लाइक क्रिएटिव राइटिंग, उनके लिए रेसिपी राइटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो बेसिकली रेसिपी को कैसे स्टेप वाइज लिखना है वो फॉलो करके आप एग्जैक्टली सेम चीज हर बार रिपीट कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज मेन्यू क्रिएशन.
नाउ अगर आप कोई लोकल कैफे विजिट करते हैं, राइट, तो उसमें सिर्फ रेसिपीज का नाम रहता है या डिशेस का नाम लिखा रहता है, यू डोंट नो एग्जैक्टली कि उसमें क्या होगा, या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा टॉपिंग होगा जो आपको पसंद नहीं है। बट इफ यू विजिट सम गुड कैफेज और रेस्टोरेंट्स, यू विल फाइंड कि हर एक डिश के नीचे उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, विच एग्जैक्टली टेल्स यू कि आपके डिश में क्या क्या चीजें आने वाली है। एंड सम ऑफ द मेन्यूज आर सो डिटेल्ड कि वो आपको बताता भी है कि उसका स्मेल कैसा होगा, वो टेस्ट करने के बाद कैसा लगेगा। सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू राइट मेन्यूज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कुछ रेसिपीज है, इनके पीछे का स्किल एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो एक रेसिपी जो हम बच्चों के साथ बनाने वाले हैं, दैट इज राइस पेपर वेज रोल्स। तो अगर आप देखेंगे इसमें टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स। सो कौन सा नाइफ किस चीज के लिए यूज करना है, वो कैसे कट करने के लिए यूज करना है, वो हम बच्चों को सिखाने वाले हैं। एंड देर आर वेरियस वेज ऑफ चॉपिंग एंड कटिंग वेजिटेबल्स, तो वो भी हम सिखाने वाले हैं यहाँ पे उनको, और उनका वो स्किल डेवलप होगा। सो बेसिकली बच्चों के साथ जो हायर ग्रेड वाले बच्चे हैं, एंड दिस क्लब इज फॉर लाइक ग्रेड 1 to 9, बट उनको 2 ग्रेड में ग्रुप में सेग्रीगेट किया जाएगा। सो जो बड़े बच्चे हैं 5 to 9 के लिए हम उनको सिखाने वाले हैं कि कैसे टाइप का कटिंग, अभी राइस पेपर रोल्स के लिए जूलियन कटिंग इज अ फॉर्म जिसमें पतला पतला स्ट्रिप्स आपको वेजिटेबल्स का कट डाउन करना होता है, तो हम बच्चों को सिखाएंगे कि वो कैसे प्रॉपरली उसको कट कर सकते हैं। अनदर थिंग इज यूजिंग ऑफ चॉपस्टिक्स। वो बच्चों को स्पून फोक ये सब यूज करना बहुत अच्छे से आता है। नाउ इट्स टाइम कि हम उनको चॉपस्टिक्स भी सिखाएं कि चॉपस्टिक से कैसे हम खाना खा सकते हैं। एंड मेन्यू राइटिंग एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। And another thing is we are exposing them to international cuisine also. So if you see, rice paper veg roll is not an Indian thing, it is a Vietnamese thing. So हम international cuisine को भी include कर रहे हैं so that children get exposed to various cultures. Next slide please. Next is ramen bowl. It's like trending, people are going crazy about it. वो instagrammable तो है, but साथ में it has variety of flavors. It is combination of different flavors. It has various kind of soup broths. Again, this dish is from Japan. So यहाँ पे हम बच्चों को सिखाएंगे कि सूप ब्रॉथ कैसे बनाते हैं, अलग अलग सूप के लिए अलग अलग सूप ब्रॉथ टेस्ट कैसा करता है, एंड टू हैव दिस काइंड ऑफ सूप व्हाट टाइप ऑफ स्पून्स शुड बी यूज्ड। और स्किल्स में हम उनको सिखाने वाले हैं कि कैसे सारे अलग अलग फ्लेवर्स को लेके एक डिश को बैलेंस आउट कर सकते हैं, और उसका प्लेटिंग और गार्निशिंग कैसे होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पनीर रैप। सो बेसिकली पनीर रैप बहुत आसान चीज है, रोटी लिया, स्टफिंग लिया, फिलअप करके रोल कर दिया, पनीर रैप इज रेडी। बट हम बच्चों को एकदम स्क्रैच से सिखाने वाले हैं कि वो रोटी के लिए आटा कैसे उनको नीड करना है, कैसे उसको रोल आउट करना है, कैसे उसका फिलिंग रेडी करना है, और कैसे उसको कुक करना है, एंड फाइनली प्रेजेंट करना है। सो ये सारी चीजें हम पनीर रैप में उनको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Next is acai bowl. Now, acai bowl is something जो वापी में I haven't seen it till now because it's a super food. I mean, it has lot of nutrients. It is packed with multivitamins और antioxidants के लिए भी बहुत ज्यादा वो important है. So acais are basically berries. So वो berries को utilize करते हुए एक kind of dessert बना रहे हैं जो healthy तो है ही, but it is like complete food. मेरे को So हम करने बच्चों देते को मुझे ये सब असाई बोल बनाना भी सिखाने वाले हैं, और रेसिपी राइटिंग इसमें स्किल रहेगा। सो सेट ऑफ सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा जिसकी वजह से आप ये प्रॉपर डिश बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सैलेड एंड इट्स ड्रेसिंग। नाउ आपने बहुत सारे कैफे ऐसे विजिट किए होंगे जहां पे सिर्फ वो लोग सैलेड सेल कर रहे हैं, एंड पीपल आर गोइंग ओवर देयर बिकॉज सैलेड इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल, बट बाहर से लिया हुआ सैलेड इट वुड हैव लॉट ऑफ ड्रेसिंग्स विच आर टेस्टी बट दे आर नॉट हेल्दी बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रेजर्वेटिव्स एंड ऑयल। सो हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा फैक्टर है जो हेल्थ को डिटोरिएट करे वो हमारे खाने में आए। सो हम बच्चों को सिखाने वाले कि कैसे सिंपल सैलेड्स है बट कैसे आप उसका ड्रेसिंग बना सकते हैं जो हेल्दी तो है ही बट साथ में न्यूट्रिशियस भी है और टेस्टी भी है। और इस सैलेड के लिए हम मिलेट्स यूज करने वाले हैं। अगर पेरेंट्स अब अगर अवेयर है मिलेट्स के बारे में, नाउ मिलेट्स पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस। इवन अ प्राइम मिनिस्टर इज फोकसिंग मोर ऑन मिलेट्स बिकॉज एक तो वो केमिकल क्लाइमेट रेजिलियंट है, मीन्स कोई भी कैसा भी क्लाइमेट रहा, लेस वाटर, लेस फर्टिलाइजर, पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल, फिर भी millets are able to grow. So now people have started shifting their staple from rice and wheat to millets. So हम भी बच्चों को millets के बारे में समझाना चाहते हैं, उसका importance, so that they even start including millets in their diet. Next slide please.
वीगन स्मूदी नाउ बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि डेयरी इज समथिंग विच पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स। डेयरी से थोड़ा अब लोग दूर जा रहे हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स अब इतने नहीं पसंद आ रहे हैं, या फिर दे हैव स्टार्टेड एक्सक्लूडिंग इट फ्रॉम देयर डाइट एंड दे हैव शिफ्टेड टू वेगेनिज्म। So basically they only use plant based products to make. So vegan smoothie में भी हम सिर्फ plant based products use करके ही एक healthy and yummy smoothie बनाना बच्चों को सिखाएंगे। इसमें we'll explain them कि कैसे food combinations लेके आप एक टेस्टी स्मूदी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट। सो एवरी टाइम वो सेम चीज को रेप्लिकेट करने के लिए दिल अंडरस्टैंड कि हमेशा इतना ही क्वांटिटी उनको यूटिलाइज करके ये रेसिपी बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रूट प्लेटर। नाउ जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे इंडियंस का फेवरेट फ्रूट ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी होता है बिकॉज उसको कट पील नहीं करना है, बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सारे ही टाइप के फ्रूट्स खाए एंड वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। लाइक इफ दे आर आई मीन इफ दे वांट टू हैव सम फ्रूट्स, वो खुद ही उसको पील कर सके, खुद ही उसको प्रॉपरली कट करके एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रूट प्लेटर इज बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन फ्रूट पीलिंग एंड कटिंग स्किल्स, और फिर उसको कैसे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस को यूटिलाइज करके कैसे एक प्लेट ऑफ फ्रूट रेडी कर सकते हैं। सो फ्रूट प्लेटर इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Eco-friendly fruit juice cups. Now you may have visited certain places. People have started thinking about sustainability. प्लास्टिक कप्स यूज करना, स्टाइरोफोम कप्स यूज करना लोगों ने कम कर दिया है। सो जो चीजें हम डम कर रहे हैं शायद वो ही हमारा ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि फ्रूट जूस कप्स। सो लाइक पीपल हैव स्टार्टेड सर्विंग फ्रूट जूसेस इन द फ्रूट कप्स ओनली। सो यहाँ पे भी हम बच्चों को सिखाने वाले हैं कि कैसे वो फ्रूट जूस प्रिपेयर करने के बाद उन्हीं फ्रूट्स में उनको प्रेजेंट कर सके। और यहाँ पे बच्चे फूड ब्लॉगिंग के बारे में भी सीखने वाले हैं, जहाँ पे दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड। सो व्हेनेवर दे आर डूइंग एनी स्किल और व्हेनेवर दे आर कटिंग फ्रूट्स, तो वो सारी ही चीज वो लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं एंड दे विल नो कि इसको कैसे वीडियो के फॉर्म में रिलीज करना है। सो फूड ब्लॉगिंग एंड डिश प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द थिंग्स जो फ्रूट कप्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हाइलाइट्स है, जैसे कि पलिन सर ने आपको ऑलरेडी बोला, कुकिंग इज समथिंग जो बुक से आप नहीं सीख सकते। आप कितना भी रेसिपीज बुक पढ़ लो, आप कितना भी वीडियोस देख लो, बट इट इज अ स्किल जिसके लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। सो ये क्लब में सिर्फ बच्चे सुनने नहीं वाले, सिर्फ देखने नहीं वाले, बट दे आर गोइंग टू डू इट बाय देमसेल्फ। सो इट्स अ हैंड्स ऑन सेशन। और हम इसमें एक एक्सपर्ट शेफ को भी बुलाने वाले हैं जो बच्चों का एक वर्कशॉप लेंगे, वेयर दे आर गोइंग टू टीच अबाउट हाउ टू प्लेट, what quantity should be taken, how it should be symmetrical कि वो अच्छा दिखे, या serving skills कैसे होने चाहिए। So this is one of the important things that a club is going to do. Another is food stall. So आपको पता ही होगा जनवरी में हमारा फन फेयर है। सो उसमें हम बच्चों के साथ कलिनरी एंड कुकिंग क्लब वाले बच्चों के साथ फूड स्टॉल्स रखने वाले हैं, जहाँ पे जो बच्चों ने सीखा है वही खुद बना के आपको सर्व करेंगे। और फूड स्टॉल भी आपको या बच्चों को पहले पे नहीं करना है उसका अमाउंट। आफ्टर फन फेयर गेट्स ओवर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से ही हमको स्कूल को पे करना है फूड स्टॉल का। सो इट इज लाइक किड्स विल बी एक्सपोज टू लाइक कि कैसे खुद का बनाया हुआ क्रिएशन कैसे सेल करना है। So these are the highlights of culinary and cooking club. Next slide, please. Grade level, as I told you, कि बच्चों को दो ग्रेड में डिवाइड किया जाएगा। वन इज फ्रॉम ग्रेड 1 to 4 एंड अदर वन इज ग्रेड 5 to 9। 1 to 4 में टीचर विल बी सुपरवाइजिंग द किड्स। हम डायरेक्टली उनको सारी चीजें अपने आप से नहीं करने देंगे, टीचर्स विल हेल्प देम आउट ताकि वो इजीली सीख सके एंड देन दे कैन प्रैक्टिस। ग्रेड 5 to 9 के लिए इट विल बी मोर, टीचर्स विल बी काइंड ऑफ मेंटर्स जो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे एंड किड्स विल बी डूइंग इट ऑन देयर ओन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सपेंस एस्टिमेशन, जैसे कि कुकिंग क्लब है सो इसके लिए भी आपको 500 पे करना होगा, बिकॉज जितना भी मटेरियल क्रॉकरी हम ऑर्डर करने वाले हैं ये अमाउंट उसके लिए यूज होगा। और जो मैंने जैसे कि मैंने कहा कि हम एक शेफ को बुलाने वाले हैं तो उनके भी विजिटिंग चार्जेस के लिए रहेगा। ये अमाउंट फिक्स नहीं है, इट विल वेरी। So yes, we are very much excited. My team has prepared a lot of good plans on this. So we expect कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कुकिंग क्लब को सिलेक्ट करें। थैंक यू सो मच।
I'd like to call Savita teacher to explain about creative writing. Savita teacher, are you there? Can you please unmute yourself? Yeah, yes. 1 minute. Okay, So hi, good yeah, morning. also a small request to all the teachers. I think we have already exceeded time. I know that you all are prepared and you have lot to share, but parents also have to go for their Sunday lunch. So please stick to the point and make it, very crisp. Yeah, please go ahead. Yeah. Good morning, parents. I'm Savita, and I'll let you all know about the Creative Writing Club. So basically, we all know that children have this gift of imagination. They can see dragons in the clouds. They can turn the cardboard into spaceship, and they can also create and speak a lot of stories to the simplest things that they look around themselves, right? So Creative Writing Club में हम उसी imagination को nurture करने की बात कर रहे हैं. So here, in this club, the children will be allowed to imagine, express, and write with confidence. So this club is going to be held for 18 days, or we are going to have 18 such sessions. Now, in these sessions, the children will start from simply sharing their ideas aloud, and then finally they're going to publish a beautifully illustrated storybook, which will be entirely written by them. Now, how are we going to do this? So next slide. Yeah. So initially we're going to help them uh, talk. So we'll ask them what do they think, what do they see, and what do they feel. So we have activities like Let's Talk, wherein we are going to ask the children what exactly is your favorite thing, and they need to describe their favorite thing in 2-3 sentences. In the next topic, which is picture talk, they are going to we are going to show them a picture, and they need to describe the picture in 2-3 sentences. The next activity will be 5 senses, wherein the children need to describe any familiar object or a setting by using words like what do they see, what do they hear, what do they smell, what do they touch, or how is the touch, and how or what do they taste. So all these activities are going to help open up their imagination. Once this is done, we are now going to help the child strengthen their language skills. So then children are going to learn how to use descriptive words and action words in the sentences that they write. So we are going to create a word wall, and we are going to write one word, and we are going to ask the children what all action words or what all adjectives can you think related to this word. So they could add words like fluffy, tiny, shiny, loud, brave, beautifully, calmly, all these adverbs. So this is how they will have certain words when they start writing something. Once this is done, we are now going to proceed to how to introduce characters to the children. Now, for introducing characters, we are going to bring some character cards. So those could be pictures of wizard or a pirate or a superhero or any animal or a fairy. Now, once they've got these character cards, we are going to ask them questions like what do they look like, or what do they like to do, or are they fine? What do you find? How do you find this character? Do you find it funny? Do you find it kind? Do you find it brave, or do you find it naughty? So all these ideas are going to put in the child's mind. Once they are able to understand what a character is, the next step that we will move forward to is describing a setting. Now, for introducing this concept, we're going to play a game with the children. So we're going to tell the children to close their eyes, and then imagining entering a magic door. So when you're entering a magic door, what do you observe, or what do you see? Where do you see yourself? So that is how they will describe and think about the setting of a story. So they might talk about I'm entering an ocean, or I'm entering a jungle, or I'm entering a desert. So this way, uh, the setting of the story will be given encouragement. Now, all these things are going to help the child to make more colorful stories, and the written part become a little richer. Now, once they're comfortable with all these aspects, we are now going to introduce them to the art of storytelling. So the previous slide. So for the storytelling,
Initially, we will start with the concept of beginning of the story. For beginning of the story, we will introduce them to the concept of hook and certain story starters. So we're going to read out certain stories and let them know how exactly can the children begin their story. Once they have started their story, the next will be sequencing of events. So the teacher will call out three events, or they are going to say three actions which are out of order. And the children have to place these in a correct sequence with the words like first, next, then, finally. Once this is done, then they are going to be introduced by certain verbs. Certain verbs means vivid verbs. So in order to make their story a little dramatic, we are going to write a few words on the board. I'll just give one quick example. So if they say the monkey went on the tree, so I'll say, does this sentence sound fine? Then we might replace the verb. So we can say the monkey jumped on the tree. I still ask, does this sound better? And then we can replace again the verb. So the child might now say, or we might just say, the monkey swung on the tree. So now I'll ask the children, which of it sounds better? So the third one obviously sounds better. So this is how we are going to introduce vivid verbs and make the story a little more dramatic. Now, once this is done, the children are now going to start writing mini stories. So they'll write a story with 2-3 sentences, wherein the teacher is going to say that you need to have a beginning, you need to have the middle, and you need to have the end to the story. The next thing that we are going to introduce to the child is animal adventure. Animal adventure means what exactly is the point of view. So imagining yourself as an animal and how do you feel. So you need to write a story imagining yourself as animal and obviously go ahead with the story. The next thing that we're going to introduce to the child is a humorous aspect to the story. So they can have a funny beginning or something silly in the middle or a funny twist or an ending which is very cheering. So all these aspects will be taken care of. We are also going to teach them problem and solution. So children understand that a story becomes meaningful when a character actually faces a challenge and how the character overcomes through the end, towards the end of the story. So this is what we are going to teach the children in this content. Next, they're also going to mix and match. So for mixing and matching, we're going to provide them with certain cards. So the child is going to mix and match the character, the setting, and the action. I'll give a quick example. So the child has mix and match, and he's got a penguin is on the moon and learning to dance. Now this is a weird combination, right? Now this weird combination is going to spark this creativity. It is also going to encourage this playful thinking, and it will also take away the fear of writing something that is correct. Now, in the final sessions, the children are going to write the complete story. They're going to edit it and illustrate it and prepare it for printing. So, by the end of the club, every child will have a real printed storybook that they have created right from start to finish. So, next slide. And this achievement we will be celebrating with a special Young Authors Showcase, wherein these young authors will proudly present their book to the parents. So by the end of the 18-day program, the child is going to write with great confidence, structure, and imagination. And most importantly, they are going to enjoy the whole process of storytelling. The estimated cost for stationery, worksheets, and printing, each child's personal storybook will be around 500 in total, which may vary slightly depending on the number of pages and the printing cost. So yeah, this is what the children of grade 1 to 4 are going to learn in the Creative Writing Club. Thank you so much. Thank you, Savita teacher. I would like to call Neha teacher to explain about life skills. I'm speaking. Hello, sir. I'm audible? Yes, you're audible. I'm just sharing your Okay. PPT. Yes, sir. अब वो बोले ठीक है. Okay. So, good morning, parents. Now, I'm going to share with you some important points about our Life Skill Club. The question arises, what is life skill and why children should join this club? So, as we know, in today's world, just having book knowledge and being good academically, it's not enough.
There are many times when children needs to manage their small tasks by their own, especially when we are not around. That's why we are excited to introduce the Life Skill Club, a place where children will learn essential everyday tasks by their own and hands-on activity with age appropriate way. So next slide. So here are the some important topics which we have chosen very carefully कि मतलब कौन सी चीज़ें बच्चे कर सकते हैं और कौन से नहीं. सो सारे एक्टिविटीज कुछ चीज़ें टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगी, उनको असिस्ट करेगी एंड देन फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे करेंगे. देन फर्स्ट वी हैव लॉन्ड्री बेसिक्स. तो पहले इस पे बच्चों को हम सिखाएंगे कि किस तरह के वॉशिंग मेथड होते हैं, बाय हैंड वॉश एंड बाय मशीन वॉश. किस तरह के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क. तो किस तरह के हमें क्लीनिंग एजेंट यूज़ करने हैं, किस तरह का वाटर क्वालिटी यूज़ करना है. अभी गर्म पानी हम वाइट कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठंडे पानी हम कलर कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं. तो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे-कैसे आप लॉन्ड्री के टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव फोल्डिंग क्लोथ्स. बेसिकली नॉर्मल जैसे हम फोल्ड करते हैं क्लोथ्स को, हम वो सिखाएँगे, बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये होगा कि हम एक डीआईवाई फोल्डिंग बोर्ड बनाएँगे, जिससे बच्चा ईज़िली और नीटली अपने कपड़े, टी-शर्ट एंड शर्ट को फोल्ड कर पाए. और इसमें ये भी होगा करके कि हम कपड़ों को जिस तरह स्टोर कर रहे हैं, तो किस तरह से हम नेपथलीन बॉल्स डाल सकते हैं. और अगर विंटर क्लोथ्स है तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स में उसको सनलाइट में डालें ताकि उसमें बैड स्मेल ना आए. ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट वी है हाउस कीपिंग. एवरीवन नोज कि चेंजिंग पिलो कवर्स, मेकिंग बेड, ये सारी चीज़ें सबको पता है. बट हाउ टू डू नीटली, कैसे परफेक्शन आएगा, किस तरह से हमें फोल्ड करना है, किस तरह से हमें हर कॉर्नर को क्लीन करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सिखाएंगे. नेक्स्ट एडिशनली किस तरह से हमें स्विच बोर्ड को क्लीन करना है, शू रैक को क्लीन करेंगे. अब बाथरूम में हार्ड वाटर स्टेन के मतलब हार्ड वाटर का स्टेन आ गया है तो किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग विनेगर और बेकिंग सोडा, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट वी हैव पैकिंग ट्रैवल बैग्स. बैग्स तो हर कोई पैक कर लेगा बच्चा, लेकिन किस तरह के एनवायरनमेंट में जा रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहा है, क्या चीज़ें एसेंशियल है, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को देंगे. यहाँ पे हम बच्चों को मिक्स अप क्लोथ्स देंगे, कुछ वूलन क्लोथ्स दे देंगे, कुछ कॉटन क्लोथ्स देंगे. फिर उनको एक टाइटल देंगे, नाउ यू आर गोइंग राजस्थान, 2 to 3 के लिए जा रहे हो, तो क्या-क्या चीज़ें आप उसमें पैक करोगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. और हर जैसे हम अपने वार्डरोब में कपड़े स्टैक करके रखते हैं, उस तरह से पैकिंग नहीं होती है जब हम बैग पैक करते हैं. कुछ हम कपड़े हमें रोल करने पड़ते हैं, कुछ फ़ोल्ड करके रखते हैं, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आ पाएँ. तो वो सारे ट्रिक्स हम यहाँ पे बच्चों को सिखाएँगे. नेक्स्ट है वॉशिंग प्लेट्स. अभी कुछ प्लेट्स बच्चे एटलीस्ट खुद का प्लेट साफ करें, कुछ छोटे-मोटे यूटेंसिल्स क्लीन करें, जैसे कि स्पून हो गया, उनके बाउल्स हो गए, वो खुद से करें. स्पेशली अपने ग्लासवेयर को मतलब कांच वाले चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाएँगे. नेक्स्ट वी है कुकिंग स्किल, किचन स्किल. मतलब एटलीस्ट जब हम ना हो एज़ अ पेरेंट और कोई एडल्ट ना हो उनके पास, तो एटलीस्ट वो खुद कुछ बना के खा पाए. कुछ किचन के अप्लायंसेस उसको पता हो कि ये चीज़ें ऐसे यूज़ की जाती है, कुछ चीज़ें हम ऐसे कट करते हैं. तो यहाँ पे कटिंग, चॉपिंग एंड पीलिंग है. बच्चा यहाँ पे फ्रूट सलाद बनाना सीखेगा, सैंडविच एंड मिल्कशेक बनाना सीखेगा. तो अब सैंडविच में वो टोस्टर वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, फ्रूट सलाद बनाएगा तो स्लाइस कैसे करना है, कट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें का ध्यान यहाँ पे देंगे बच्चे, सीखेंगे. नेक्स्ट वी है क्रिएटिव एक्टिविटी. जैसे अब फेस्टिवल का माहौल होता है तो व्हाट दे कैन डू एट होम. क्लीनिंग एंड वो सब तो हो गया, मम्मा ने कर दिया. व्हाट दे कैन डू, सो दे विल डू मेकिंग रंगोली. मेकिंग मतलब रंगोली बनाना सिर्फ कलर से नहीं होता, कुछ हम फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं रंगोली में. फिर हम चावल का पेस्ट से भी यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हम बताएँगे बच्चों को और बच्चा खुद भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा. मेकिंग तोरण बाय यूजिंग फ्लावर्स एंड लीव्स एंड गिफ्ट रैपिंग. वेस्ट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे कि वेस्ट को सेग्रीगेट करना. ड्राई वेस्ट क्या होता है, वेट वेस्ट क्या होता है, ब्लू डस्टबिन कब यूज़ करना है, ग्रीन डस्टबिन कब यूज़ करना है, और आप अपने किचन वेस्ट से कैसे नेचुरल कंपोस्ट बना सकते हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे. नेक्स्ट वी है डिजास्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. तो दिस इज वेरी लाइक क्रूशियल कि इसमें हम
एकदम मिनिमम इन्फॉर्मेशन दे और करेक्ट दे, ताकि बच्चा ऐसा कुछ मिसयूज भी ना करे और हमेशा ये ना सोचे कि नहीं टीचर ने वो सिखाया था तो हमें ऐसे करना है। बट ऐसा कुछ ऐसी चीजें सिखाएंगे बच्चों को कि जब तक इमरजेंसी वाले कुछ हमें प्रोफेशनल हेल्प ना मिल पाए तब तक ये चीजें हम कर सकते हैं ताकि हम सेफ रहे। तो इसमें हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताएंगे, कभी अगर फायर हो गया घर में एक्सीडेंटली तो कैसे अपने माउथ को कवर अप करना है, कैसे वो टॉवल को गीला करके अपने दरवाजे के पास लगा दो ताकि स्मोक ना आए, आप ले डाउन कर जाओ ताकि जो एक्चुअल जो स्मोक होता है वो ऊपर की तरफ ज्यादा जाता है, जमीन की तरफ नीचे रहता है, तो अपनी बॉडी को जमीन पे सुला दे। मतलब ऐसी सारी छोटी ट्रिक्स बताएंगे बच्चों को। नेक्स्ट, आप होम रेमेडीज कैसे यूज कर सकते हो, कि अगर आपको कट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अपने मतलब किचन में से क्या यूज करके आप कर सकते हो। अगर ब्लीडिंग हो रही है ज्यादा तो आप टर्मरिक पाउडर को पेस्ट लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। स्पेशल हाइलाइट्स ऑफ दिस क्लब ये होगा करके कि हम स्मार्ट होम चैलेंज एक क्लासरूम सेटअप करेंगे जहाँ पे बच्चा अपना जो उसने सीखा है एक पेयर्स में हम बच्चों को रखेंगे। तो इस पेयर्स में बच्चा डिस्प्ले करेगा, कोई लॉन्ड्री कॉर्नर रखेगा, कोई ट्रैवल बैग पैकिंग करेगा, कोई हाउस कीपिंग करेगा, कोई किचन स्किल्स बताएगा, कोई फर्स्ट एड चीजें बताएगा। तो ये एक रूम में बच्चा हर एक चीजें डिस्प्ले करेगा एट द एंड ऑफ द दिस सेशन। लास्ट वी हैव कॉस्ट एस्टिमेशन। नेक्स्ट स्लाइड। सो कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर दिस क्लब इज 600। इसमें हमने टूल्स जो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी सप्लाईज जो देंगे, और जो जैसे मैंने कहा कि लास्ट में बच्चा डेमोन्स्ट्रेट करेगा तो उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो भी किट चाहिए तो वो चीज़ हम जब प्रोवाइड करेंगे तो उसका अराउंड कुछ 600 होगा। एंड वी आर थिंकिंग ऑफ कॉलिंग पेरेंट, वो हम आपको बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं या फिर जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। तो ये है ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन। So lastly, I warmly welcome all children who are interested to join this club. Thank you. Thank you for your time. Thank you, Neha teacher. I like to call Farin teacher to explain about astronomy club, but I request all the other teachers to go little short. Day wise plan हम explain नहीं करें क्योंकि document share करने वाले parents can read anyway. Farin teacher, can you please unmute yourself? Yes, sir. So hello parents, this is Farin here and I won't take it long. So मैं आपको एक briefly बता देती हूँ। ये club 5 to 9 grade के बच्चों के लिए रहेगा. Can I have the next slide please sir? So basically ये club क्यों? So हमें पता है कि like there are celestial objects, planets और ये सारे उसके हिसाब से बच्चे प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं. But other than that यहाँ पर क्या गोल रहेगा? The child will be able to opt for different what we say the the different career options. How the child is going to opt for going to do in the astronomy club. The next slide please. So basically यहाँ पर कैसे topics लिए गए हैं, I'll explain it in short. Understanding the solar system, planet, Earth का birth, then you have different types of galaxies. The children will learn the mechanism of rocket and telescopes. Exoplanet क्या है, उसके बारे में life, the alien life क्या है, वो बच्चा identify करेगा और research करेगा. The kids will have brainstorm regarding all these concepts. Other than that, the myth behind the constellation, how to navigate the sky, and along with the hand-on activity and model building. The next slide. The highlights you can see here, ये तो एक यहाँ पर एक पता है कि moon का face का model the kid will be making. But other than that, we have arranged a scientist from Nehru Planetarium. S. Natarajan is the name of the person who is going to come to the school, visit the school, and the children and will help our child to observe the night sky and observe the celestial objects like moon, Jupiter, other constellations, such other bodies. The next slide. The estimated cost here is 700 per student. So basically the guest session और सारे materials जो हमें लगेंगे, what we need to do in the model making or something, ये estimated cost है, and it may vary as per the final planning.
Yeah. So this was a brief review of Astronomy Club. Uh, I would like to call Sakshi teacher to explain about her club. Hello, am I audible? Hello. Yes, you're Yes, audible. Go yes, ahead. yes, you are. So I can't see the presentation. Also, I can't see Farhin. Here, Sorry, ma'am. Sakshi. Sakshi, I can't see you. Uh, am I visible now? Yes, please go ahead. All right. A very good afternoon, parents. I'm going to try to take as less time as possible. So I'll start with a secret. Every child is already a great speaker. If at home your child has ever explained कि उन्हें नए टॉय की क्यों ज़रूरत है, उन्हें एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम की क्यों ज़रूरत है, या फिर आपके रूल्स कैसे बहुत अनफेयर है, they are already a debater. So we thought, why not use that talent in a useful way? Welcome to the Elocution and Debate Club. This is a place where children learn to speak confidently, think smartly, and have a lot of fun doing it. We keep things very simple but very lively. So, can we please have the next slide? The next one as well. We'll start with very simple things. We start with fun speaking games. That means your child would get very silly prompts like if I had a pet lion or why holidays should last for 6 months and school for 6 months. They'll speak for 1 minute. There'll be a lot of laughter, there'll be a lot of chaos, and there's going to be zero fear of speaking out of line. We'll also have impromptu challenges, which is going to be a big hit. We're going to give them a surprise topic and they start speaking instantly. Some are going to give you serious answers, some are going to give you absolutely creative ones, and some are just going to tell you why they have a favorite chocolate. But they will all get confident week after week. We will also have voice and expression activities where children are going to learn how to read short lines with different emotions. They're going to be happy, they're going to be angry, they're going to have superhero voices, and they're going to have robot voices. Everything that's going to help them understand themselves better. It helps them express themselves clearly and sometimes very dramatically as well. We are also going to do body language activities. Now, this is where children learn how to stand confidently, they learn how to make eye contact and stop doing the nervous foot dance every time they're on the stage. It's very cute to watch and is going to be very helpful for them. One of my favorite activities is going to be the meme and pop culture debate. Kids are going to debate extremely important topics like are emojis better than words? Is Ronaldo better than Messi? Or should cartoon count as homework? It's going to keep them very excited. And trust me, you've not seen them in the class, but they take these debates very, very seriously. We are also going to have group panels and role play exercises. Your child is going to pretend to be a talk show host. They're going to pretend to be celebrity guests, judges, or speakers, even. It's going to feel like a mini talk show, and I promise you, they're going to enjoy every single minute of being there. Sometimes we are also going to run a mini youth courtroom. One child becomes the judge, other child becomes the lawyer or witness, and suddenly we are all trying to understand कि साक्षी मैम ने सैटरडे को हमें स्कूल क्यों बुलाया है. It's playful, but it's great practice for structured thinking. Next line. Now, our goal is simple. It's going to help children to enjoy speaking instead of just being afraid of it. It's going to help them think very clearly, express themselves kindly, not raise their volumes at a 200%, and speak very proudly. Because all of this, so can I move to the next slide? All of this is going to lead to our final showcase, which is a youth debate showcase.
where your children are confidently going to speak on the stage in front of you. You're going to get to see their progress, their confidence, their humor, and their personality shining. So, yes, this is the club where your child is going to discover their voice, their courage, and their creativity, and possibly win a few arguments with you at home. So, you're welcome in advance, and I'm sorry if they actually end up winning a few more arguments than you hope so. Thank you. Thank you, Sakshi teacher. I would like to call Norin teacher for the final presentation. Norin teacher, can you come and explain about gardening club? Yes, sir. Can I have the PPT? Yes. So parents, another exciting club is gardening club. So next slide, sir. सो जो लोग वापी में रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि पिछले 15-20 साल में वापी कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले जो एम्प्टी स्पेसेस या एम्प्टी लैंड था वो अब कंप्लीटली बिल्डिंग्स और अर्बनाइजेशन से भर चुका है। सो ये क्लब एम करता है कि बच्चों को हम कैसे फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के साथ कैसे वो अपना एनवायरमेंट का भी ध्यान रख सके और ऐसे क्या नए ग्लोबल ट्रेंड्स है जो उनको हेल्प करेगा कि वो प्लांट्स को और फॉरेस्ट को सस्टेन कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस गार्डनिंग क्लब के लिए भी है जिससे बच्चे एक्सपोज होंगे। सो ये सारे ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट है बिकॉज जितना स्पीड से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है शायद उतना स्पीड से हमको नॉलेज भी लेना है कि उस फास्ट चेंजिंग क्लाइमेट के साथ हमको कैसे एडजस्ट करना है। सो ये क्लब बच्चों को एक्सपोज करेगा उन सारे ही करियर ऑप्शंस के साथ। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिक चीजें हैं जैसे कि टूल्स कैसे यूज करना है, सॉइल टाइप क्या होना चाहिए, टेक्सचर क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजर क्या होता है, ये सारी ही बेसिक चीजों के साथ हम उनको नई और अपकमिंग चीजें भी सिखाएंगे जो गार्डनिंग और एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। वर्टिकल गार्डनिंग है, जैसे कि मैंने कहा स्पेसेस बहुत कम होती जा रही है तो कम स्पेस को यूटिलाइज करके या फिर वर्टिकल वॉल को यूज करके कैसे वो गार्डनिंग कर सकते हैं और कैसे सिंपल चीजों को यूज करके उसको एस्थेटिक बना सकते हैं, तो ये भी वर्टिकल गार्डनिंग में हम बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। अभी जो पहले कन्वेंशनली ग्रोन प्लांट्स होते थे जिसके लिए सॉइल चाहिए, लैंड चाहिए, उतना स्पेस चाहिए, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग, इवन चाइना एंड जापान हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अप मोर प्लांट्स व्हिच आर हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। तो इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ मीडिया यूज होता है जिसमें सॉइल की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वाटर और मीडिया को यूज करके हम प्लांट्स को कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा हम यील्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट। मिनी ग्रीन हाउस। सो अब ग्रीन हाउस के बारे में बच्चे जानते हैं, उन्होंने पढ़ा भी है, बट टू प्रैक्टिकली ट्राई इट आउट तो हम स्कूल में एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाने वाले हैं जिसमें किड्स आर गोइंग टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। वो ध्यान भी रखेंगे कि कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी लेवल कैसे कंट्रोल करना है। सो ये उनके लिए काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा और ट्रायल एंड एरर बेसिस होगा कि क्या फैक्टर्स काम करते हैं और क्या फैक्टर्स काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टेरेरियम। सो आपने एक्वेरियम देखा होगा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज टेरेरियम जिसमें एक छोटा सा कंटेनर के अंदर ही पूरा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। सो हमारा भी इसमें यही कोशिश रहेगा कि हम बच्चों को एक छोटे से कंटेनर के अंदर, एक छोटे से ग्लास बॉटल के अंदर कैसे सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको पता चलेगा कि कैसे टाइप ऑफ प्लांट यूज कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, वाटर का लेवल कितना होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबल ट्रेंड्स। सो गार्डनिंग फोकस कर रहा है, जैसे कि आजकल सब लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो सबको उसका इंपॉर्टेंस पता है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कितने हार्मफुल है। सो ग्लोबल ट्रेंड्स भी अब वैसे ही डेवलप हो रहे हैं कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। सो इसमें हम बच्चों को अर्बन माइक्रो गार्डनिंग के बारे में सिखाने वाले हैं। देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज है प्रमोटिंग गार्डनिंग फॉर मेंटल हेल्थ, उसके बारे में भी हम उनको बताने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स आपको मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग में हेल्प आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एआई असिस्टेड गार्डनिंग। एआई इज एवरीवेयर, हर चीज के लिए अब एआई आ चुका है। सो इवन गार्डनिंग के लिए भी कैसे एआई को यूज करते हुए हम बेटर गार्डनिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो भी हम बच्चों को सिखाने वाले हैं। और क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसे कि मिलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं।
ये गार्डनिंग क्लब में हम बच्चों को वो भी सिखाने वाले हैं. नेक्स्ट, हाईलाइट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहने वाला है. बच्चे सिर्फ बुक्स में से पढ़ने वाले नहीं है, वो खुद प्रैक्टिकली फील्ड पे जाके प्लांट्स को ग्रो करने वाले, सारे ही नए ट्रेंड्स ट्राई आउट करने वाले कि कौन सा काम करता है, कौन सा काम नहीं करता है, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे. और इसका हाईलाइट ये भी है कि इसमें वन डे फील्ड ट्रिप होगा टू अ नियर बाई फार्म और अ नर्सरी, जहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रैक्टिसेस चल रही है और कैसे हम बाकी सारे कंट्रीज के साथ में है या किन चीजों में हम बाकी सारी कंट्रीज से पीछे है. सो ये सारा ही एनालिसिस बच्चे करेंगे. सो बाय द एंड ऑफ द क्लब बच्चों को समझेगा कि वेयर डज इंडिया स्टैंड और क्या क्या प्रैक्टिसेस है जो इंडिया को अडेप्ट करने की जरूरत है. नेक्स्ट, एक्सपेंस एस्टिमेशन. इसका एक्सपेंस एस्टिमेशन रहेगा अराउंड 800, बिकॉज जितने भी मटेरियल्स है जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स के लिए मैंने कहा था, ये मीडियम को प्रोक्योर करने के लिए वी हैव टू स्पेंड दिस अमाउंट, और फील्ड ट्रिप के लिए ये अमाउंट यूटिलाइज होगा. नेक्स्ट सर. सो वी होप के ज्यादा से ज्यादा बच्चे गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करें सो दैट दे आर अवेयर अबाउट देयर फ्यूचर एंड दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच. Thank you, Noreen teacher. Hope parents it was helpful to you. So we are also sending all the PDF files of these PPTs. Uske baad, with more detail, we'll send one more PDF for all the clubs. You can read it on your own. You can read aloud to your child. So, but end of the day, let the child choose the club. So once the Google form comes, ask your child which club he wants to go. Then you please choose the club accordingly. Thank you so much for patiently listening to all our explanations. That's for the day. Thank you so much. Bye.